all law aspirant guys. So if you're preparing for these law entrance exams like CLAT, MH LAWCET, SLAT, NLAT, AILET and CULLE, so if you want to improve your current affairs, so this session will be very helpful for you. So I will suggest just continue follow this series, and this is the weekly current affairs session. So from each week we will discuss here most important and expected questions for your exam. So if you will follow the continue this series, so definitely you can improve your current affairs as well as static GK. Okay, now let's see, and one more important information is here for your preparation. So if you want to start your preparations and under the guidance of the expert faculty, so Maneuver is the best option for you. So you can join Maneuver classroom program or live program. So if you're Mumbai based, so these all are the Maneuver centers, so you can call on these number in case of any doubt and query. And for online, 8828581454 if you are out of Mumbai and Maharashtra. Okay, some other program are also there like self-study, mock test and ebook. So you can visit Maneuver website to explore these programs. So link is mentioned in a description, www.maneuveredu.com. So here I will show you, just see here. So you just have to click on a link which is mentioned in a description, or you can type in a browser www.maneuveredu.com and you will see Maneuver website, and you just have to click here law entrance, and you can see all law entrance exams. So as per your preparation you can explore or whatever programs, like for example if I will say you MH LAWCET, so here you can see different type of the program like live, self-study, sectional, mock test and book. If you are preparing for the multiple exams, so you just have to click on all law exams. So as per your preparations, like if you are looking for the self-study program, so you can click on self-study, and if you want to see what are the course content, so just click on view details. Okay, so here you can see course content. It means video lecture, ebooks, mock test. So everything here you can see, so you can just explore, and if you want to join, so you can proceed further. Okay, now let's see important question guys. So now see the first question which is important for your exam. Okay, so now let's start the top important golden question from this week. So first question is here from the sports section. Who won the 2025 FIDE Women's World Cup, Federation of International Chess? So what is the name of the player? Humpy Koneru, Tanziang, Divya Desmukh and Alexandra Grechikina. So what is the name of the player? And basically this player is from the India, so that's why it's more important. So correct answer is the Divya Desmukh, just remember. And as per the current affairs, just remember who is the winner as well as Divya Desmukh related to which sport. So just remember she is related to chess. Okay, the question may be formed in this way also. So Divya Desmukh, 19-year-old international master from Nagpur, Maharashtra, has won the 2025 FIDE Women's World Cup and she defeated the Grandmaster Humpy Koneru. She is also from the India. Score 1 point, and these all are the details. And Grandmaster Humpy Koneru run up, so she was on a second position. Okay. Next question is your Maharashtra first glass bridge. Very important questions guys. Open over at which place in Sindhurg? So Nepa waterfall, Amboli waterfall, Kune waterfall and Randha falls. So at which place this basically first glass bridge? So that's why it is very important and expected for your exam. So here I can say this is a most important question. So correct answer is the Nepane waterfall. So a glass bridge was recently inaugurated over the Nepane waterfall, Maharashtra, and this inauguration was done by the Maharashtra State Minister, and the main aim of this project is to increase the Sindhu Ratna tourism scheme, which aim to promote the lesser known tourist destination in the state. Okay, so located near the Nandwade village in the Konkan region. So these all the details are also important, so you can read. Next question, what is the objective of the Gyan Bharat mission launched in India? So very important you can say initiative, scheme, mission from the state government of central government of India. So space exploration, combating the climate change and digitization of the ancient manuscript and rural electrification. So what is the main aim of this Gyan Bharat mission? So it's started by the central government. So correct answer, just remember digitization of the ancient manuscripts. जो ancient manuscript है, पांडुलिपि जिसको बोलते हैं, उनको digitization करने के लिए ये mission है. Okay,
सो जस्ट रिमेंबर, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव स्कीम्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच सक्सेसफुली टेस्टेड? सो इट्स इन चेन्नई, वाराणसी, बेंगलुरु एंड रायबरेली. सो दिस इज द फर्स्ट hydrogen basically for the railway, first hydrogen powered coach. So that's why it's important, and India is targeting to be till 2070 to net zero emissions. So and till 2030 India government is planning to implement in the most of the government sector to use the hydrogen energy. Okay, so hydrogen basically it's a hydrogen power to extract the hydrogen from the water with the help of electrolyzer process. Okay, so this is the pure green energy. So India is taking the initiative for the green energy. So as per this, what is the correct answer? So correct answer is Chennai. So recently India Railway successfully tested the first hydrogen powered coach at integrated coach factory Chennai to mark the major step India shifted toward the clean and green transportation and tested the coach 100 horsepower. So these are the details. And hydrogen fuel offer the zero carbon emission supporting the India's clean energy transition. So hydrogen basically जो process होता है water से hydrogen को extract करना with the help of renewable energy. Renewable energy it means it may be solar, otherwise wind. Okay, so after extracting the hydrogen from the water with the help of electrolyzer process, then हाइड्रोजन फ्यूल को यूज किया जाता है जिससे जीरो इमिशन होता है. सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट टुवर्ड द नेट जीरो इमिशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ किरण देसाई न्यूली लॉन्ग लिस्टेड नॉवेल फॉर द बुकर प्राइज 2025? So her book is shortlisted for the Booker Prize, and Booker Prize is the most important award on an international level related to literature and for the author. So Long Light of the World, Inheritance of Dream, The Loneliness of Sonia and Sunny, and later to Immigrant. So basically these questions will be most expected for your exam. अगर से ये विनर होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अदरवाइज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर बुक इज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज. एंड बुकर प्राइज देयर आर टू टाइप ऑफ द बुकर प्राइज. फर्स्ट वन इज अ इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो नॉवेल किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखे जाते हैं एंड आफ्टर दैट इट्स ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज. और बुकर प्राइज इज फॉर जो ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. ओके, सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोल सकते हो. इट्स लाइक अ नोबेल प्राइज फॉर द ऑथर. ओके, सो इतना इंपॉर्टेंट है और एवरी ईयर एग्जाम में इससे रिलेट करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यू कैन रिमेंबर. एंड सी हियर, सो लॉनलीनेस ऑफ द सोनिया and Sunny. So just remember the name of the novel as well as author, because this question may be also framed like books and author point of view. Okay, so Booker Prize related to award section, and as a books and writer point of view, just remember the name of the writer and name of the book. Okay, next one, from Rajasthan, an annual folk ritual subvert caste and class, Gawri the Mewar Bhil, during which Hindu month is the Gawri festival performed? So basically this question is related to art and culture. So देखो हर एक स्टेट का फोक डांस, हर एक स्टेट के कौन कौन से ट्राइबल्स है, ये रिमेंबर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो इफ यू विल फोकस ऑन अ करंट अफेयर्स, तो जो करंट अफेयर्स में कोई भी फोक डांस हो, कोई भी जो ट्राइबल कम्युनिटी हो, कोई भी आर्ट एंड कल्चर हो किसी भी स्टेट का जो वहां का फेमस हो, तो अगर से हर एक स्टेट का रिमेंबर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्राई टू फोकस ऑन अ करंट अफेयर्स. सो इसलिए इस सीरीज में मैं कंटिन्यू आप लोगों को करंट अफेयर से कनेक्ट करके स्टैटिक जीके को इंक्लूड करता हूं कि आपको ज्यादा स्टैटिक जीके ना पढ़ के रेलिवेंट स्टैटिक जीके स्टडी करोगे तो इस वे में आप और काफी बेटर वे में इंप्रूव करोगे. तो कंटिन्यू इस सीरीज को अगर फॉलो करोगे तो आपका स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों काफी बेटर वे में इंप्रूव हो जाएगा. ओके, सो इसलिए कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते रहो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लो, एंड कंटिन्यू अपडेट्स एंड इस टाइप के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कंटिन्यू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे. ओके, सो हियर एज पर दिस करेक्ट आंसर इज व्हाट? श्रावण एंड भाद्रपद. सो दिस इज द गवरी. जस्ट रिमेंबर, गवरी is a very important festival from Rajasthan and celebrated by the ट्राइबल कम्युनिटी भील. कोल भील बोलते हैं ना, जो राजस्थान की काफी फेमस कम्युनिटी है, तो भील कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है. ओके, 14 डेज तक ये एनुअल ट्राइबल रिचुअल फोक फेस्टिवल चलता है. भील कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है. सो भील कम्युनिटी कहाँ से है? राजस्थान से है. गौरी कहाँ से है? राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल है. ओके, सो इस तरह से सारी चीजों को रिमेंबर करना चाहिए रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th फास्ट पेट्रोल वेसल्स launched by the Goa Shipyard Limited
फॉर द ICG इंडियन कोस्टल गार्ड. सो यहाँ पे एक ICG से रिलेट करके 5th फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स न्यूज में रहा है. तो जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ इट. विक्रांत, अटल, Saurya, Samudra. So what is the name of this fast petrol vehicle? And basically main purpose of this vessels is what coastal patrolling है, surveillance है, anti smuggling है. So this is a part of the news. So just remember this is name of this vessels is what Atal. Okay. Next, which rocket was used to launch the NISAR satellite. So recently this was the part of the news. So NISAR satellite काफी important है with the collaboration of the NASA and ISRO. दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है for the observation of Earth, basically oceans and जो ice area होते हैं, जो frozen area होते हैं, उसको study करने के लिए. So as per the question, so what is the name of the rocket which was used to launch? Okay, so PSLV C-55, GSLV MK3, GSLV F-16 and SSLV D2. What is the name of the rocket which was used to launch this NISAR satellite? Okay, so remember GSLV 16, and this is a joint collaboration project of the NASA and ISRO. Okay, so NISAR is a ISRO synthetic aperture radar, and the main purpose of it, this satellite, is it can penetrate the fog, dense cloud and ice layer, and making it the useful disaster management and cyclone, as well as the main purpose to study the land ice deformation, land ecosystem, cryosphere, it means जो ice areas होते हैं, and ocean regions. So main purpose ये है. तो this is a very related to science and technology important news, as well as ISRO and NASA को एक collaborating project है. So उस हिसाब से आप remember रखो. Which new Harappan site has been discovered in Rajasthan? देखो, Rajasthan related to Harappan site. What is the Harappa? This topic is very important as a history point of view. Harappa क्या है? Harappa Indus Valley civilization क्या है? Which river is important? कौन से हरप्पा सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड बैंक ऑफ विच रिवर? सो रावी रिवर हो जाएगा. ओके, सो ये जो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से, तो अगर से ऐसी कोई चीजें न्यूज में आती हैं तो हरप्पा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन विच इज रिलेटेड टू इंडिया. अगर से आप देखो तो मेसोपोटामियम एंड चीन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन. सो इसी तरह से वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशन में हरप्पा सिविलाइजेशन भी आती है जो इंडिया से रिलेट करके. तो अगर से इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज गाइज, तो हरप्पा सिविलाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो एज अ हिस्ट्री से आप हरप्पा सिविलाइजेशन को अच्छे से स्टडी करोगे. बाय द वे, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सी कालीबंगन, धोलावीरा, रातादिया री डेरी, डेरी इट मीन्स होता है छोटे छोटे हिल वाला एरिया. लोथल, ओके, सो लोथल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विच इज फेमस फॉर द डॉकयार्ड, जो हरप्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, सो एज पर दिस करेक्ट आंसर इज रात्यारी डेरी. सो हरप्पन साइट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द रात्यारी डेरी इन जैसलमेर, राजस्थान. सो रिमेंबर रखो, कुछ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिली है. तो मोस्टली जो हरप्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स रिलेटेड टू रिवर, particular city situated bank of which river, as well as archaeological finding. So इस टॉपिक को आप हिस्ट्री से नोट कर लो, अच्छे से स्टडी कर लेना. आने वाले एग्जाम्स में पॉसिबल हो सकता है इससे रिलेट करके पूछे आपसे. Who is the first Indian in 13 years to become the head coach of the Indian national football team? So in 13 years के बाद कोई इंडियन कोच इंडियन फुटबॉल टीम का कोच अपॉइंट हुआ है. So related to appointment section, this question is a highly expected. So साविकियो मेडेरिया, सुनील खत्री, Khalid Jamil and Stephen Constantine. So what is the name of the person who is appointed as a Indian football team coach? So related to appointment section, most important question. So Khalid Jamil, just remember, Khalid Jamil become the first Indian 13 years to appointed head coach of the Indian national football team, and he was selected over the Stephen Constantine and Stephen Tarkovic. And Khalid Jamil is a 48 years old and famously led the Aizawl FC to win the I-League in 2017. Okay, कुछ अचीवमेंट भी है, इनके नाम को आप रिमेंबर रखो. Next is, what does the HOPE stand for the context of the new space station in Ladakh? So new space station Ladakh से रिलेट करके what is the full form of HOPE? So recently अगर कुछ ऐसे अचीवमेंट साइंटिफिक, एज आई सेड कि इसरो DRDO से रिलेटेड कुछ भी चीजें न्यूज में हो रिलेटेड टू सक्सेसफुल लॉन्च या फिर एनी टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज, सो जस्ट ट्राई टू अपडेट. बहुत हाईली एक्सपेक्टेड होता है. सो हाई ऑर्बिट planetary experiment, human outer planetary exploration, habitat observation and planetary environment, human orbit and planning endeavors. So what is the name, what is the full form of basically this HOPE, which is a project of the ISRO and new space station in Ladakh से relate करके. So correct answer is a human outer planetary exploration. So
Proto-Planet and Bengaluru-based space outreach organization has launched the HOPE session. HOPE stand for the Human Outer Planetary Exploration, supported and technical and financially by the ISRO. So ISRO से कहीं ना कहीं connect करके है, so that's why it's important. Okay. Next question, where is the India's first 1 megawatt green hydrogen plant located? So देखो ये again this is the first 1 megawatt green है, so that's why it's very important. As I said कि India is continue taking the initiative toward the green energy. So ऐसे question अगर से न्यूज में है तो आपके लिए important हो गए. So that's why week wise हम यहाँ पे continue update करते जाओगे तो काफी better way में आप improve कर लोगे current affairs as well as static GK. सब एक साथ पढ़ोगे तो फिर mismatch होने लगता है. So that's why I will suggest कि आप वीक वाइज अपडेट करते रहो और इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते रहो. सो मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट एंड दीनदयाल पोर्ट एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, एट विच पोर्ट दिस 1 megawatt green hydrogen plant located? So correct answer is the Deendayal port. India commissioned its first indigenously developed 1 megawatt green hydrogen plant and located Deendayal port, Kandala, Gujarat, and these all are the details you can read. Okay. Next, what was the name of the counter terror operation in which Pahalgam attack mastermind killed? So very important. So what is the name of this operation जिसमें जो पहलगाम के जो टेररिस्ट थे उनको शूट किया गया है, उनको मार दिया गया है. तो इसका मास्टरमाइंड भी यहाँ पे जो इंडियन आर्मी ने मार दिया है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन? ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन वज्र, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन त्रिनेत्र. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन? सो करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन महादेव. ऑपरेशन महादेव. ऑपरेशन सिंदूर जो था, पाकिस्तान को अटैक किया गया था. इस अटैक जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके रिटेलिएशन में, उसके अगेंस्ट में, एंड जिसको ऑपरेशन सिंदूर बोलते हैं. तो इसको मिसमैच मत करना, काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करके ना. दिस इज द ऑपरेशन महादेव. इट्स रिलेटेड टू kill the mastermind of that terrorist. Okay, so Operation Mahadev joint counter terrorism operation by the Indian Army and Jammu Kashmir Police. इसको ऑपरेशन महादेव क्यों बोला गया है? बिकॉज द नेम महादेव वाज derived फ्रॉम द जाबरवान महादेव रीज लाइन नियर द इनकाउंटर साइट. सो वहां की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को महादेव बोलते हैं. दैट्स वाई इस ऑपरेशन को महादेव रखा गया. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑपरेशन महादेव, इट्स रिलेटेड टू किल द मास्टरमाइंड रिलेटेड टू द पहलगाम अटैक. नेक्स्ट वन, विच टीम ओन द UEFA, it means European Union Football Association's Women's Euro Cup 2025. So important questions related to sports section. So Spain, Germany, England, and France. What is the name of the country who won the European Union Women's Football Cup? Basically, it's known as a Euro Cup. Okay, so correct answer is England. England women's football team won the UEFA Women's Euro Cup 2025. Final was held in Basel, Switzerland, and England defeated the world champion Spain in penalty shootout. Okay, so remember the just name of the winner. एंड डिफीटेड होम स्पेन. समटाइम रनर से रिलेट करके भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि इंग्लैंड डिफीटेड इन यूरो वुमेन्स वर्ल्ड कप टू विच कंट्री? ओके, सो जस्ट रिमेंबर स्पेन. ओके, नेक्स्ट वन, who became the first ever player to score the 4 centuries in the debut test series as a captain? So यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड देखने को मिला है रिलेटेड टू क्रिकेट. So Joy Root, Steve Smith, Shubham Gill, KL Rahul. So what is the name of the player who made this record 4 century in his debut test series as a captain? So correct answer is Shubham Gill. Shubham Gill scored the century in the 4th test as England at the Old Trafford. He became the first ever batter to score the 4th century in his debut test series captain. Previously this record was held. So यहाँ पे कुछ records है, वार्विक, आर्मस्ट्रॉन्ग, डॉन ब्रैडमैन, ग्रे चैपल, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ. So each had the 3 centuries in their debut series as a captain. So यहाँ शुभम गिल ने जो रिकॉर्ड बनाया 4 century as a captain. Okay, as well as Gill hold the record for the most 100 score by the captain in the test series against the England. So these all are the important 15 questions, guys. So just try to practice and revise. So these questions will be helpful for you. Okay, so these all are the important questions from the last week, and hope so these questions will be helpful for you. And if you think these questions are helpful for you to improve your current affairs and static GK understanding, so please like the video and continue updates related to exams as well as strategic video for your different exams and preparations. So you can subscribe our channel to get the latest update. Okay, and if you have any additional doubt, any query, any questions, you can ask in a comment. Okay, so see you in next week with latest current affairs. Till the time, just revise and practice, guys. Jai Hind.